हर हर महादेव। आज हम लोग डील करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल रूल फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस एंड जनरल रूल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ सर्विस, इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 days then invoice or payment whichever is earlier. If invoice is issued within 30 days then invoice or payment whichever is earlier, but otherwise completion or payment whichever is earlier. In case of supply of goods, if invoice issued at the time of removal then invoice or payment whichever is earlier, but otherwise removal or payment whichever is earlier. Summarizing this up, supply of service, if invoice issued within 30 days then invoice or payment whichever is earlier, but if not within 30 days then completion or payment whichever is earlier. In case of goods, if invoice issued at the time of removal then invoice or payment whichever is earlier, but otherwise removal or payment whichever is earlier. Now coming to advance receipt. For service, date of payment. For goods, date of actual delivery. For service, date of payment, but for goods, actual delivery of goods. Now coming to continuous supply, if invoice is issued within due date then invoice or payment whichever is earlier, but if invoice not issued within due date then due date or payment whichever is earlier. For continuous supply, if invoice issued within due date then invoice or payment whichever is earlier, but if invoice not issued within due date then due date or payment whichever is earlier. Now coming to voucher, if supply is identifiable then date of issue, if supply is not identifiable then date of redemption of voucher. इफ़ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल यानी कि आपको पता है कि वाउचर किस लिए दिया गया है। फॉर अगर मान लीजिए कि बिग बाज़ार बोल रहा है कि ये वाउचर है ओनली फॉर चॉकलेट्स, कि आप 1000 रुपये तक का चॉकलेट खरीद सकते हो, देन सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, तो उस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर ही टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। लेकिन अगर सप्लाई इज अनआइडेंटिफाइबल या नॉट आइडेंटिफाइबल, अगर आपको बिग बाज़ार कहता है कि आप 1000 तक कुछ भी खरीद सकते हो, सो देयर इज़ नो आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पर डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर हो जाएगा। Now interest and penalty, in all cases interest and penalty are in cash basis. Now coming to joint development agreement. Joint development agreement before 1/4/2019 and after 1/4/2019. Before 1/4/2019 when possession transferred by builder and after 1/4/2019 date of issuance of completion certificate or date of first occupation whichever is earlier. तो joint development agreement before 1/4/2019 when possession transferred by builder, after 1/4/2019 date of issuance of completion certificate or date of first occupation whichever is earlier. For reverse charge there is 2 columns, service and goods. For service P61, for goods MP31. For goods MP31, goods मिला, date of payment and 31st day from date of invoice whichever is earliest वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा इन केस ऑफ गुड्स, बट इन केस ऑफ सर्विस P61 डेट ऑफ पेमेंट एंड 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस whichever is earliest वही टाइम सप्लाई रहेगा। तो समराइजिंग द रिवर्स चार्ज सर्विसेज एंड गुड्स, सर्विसेज के केस में P61, P मीन्स डेट ऑफ पेमेंट, 61 मीन्स 61 डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस whichever is earliest is the time of supply. In case of goods MP31, goods मिला, receipt of goods, P payment हुआ, date of payment and 31 is 31st day from date of invoice whichever is earliest is the time of supply for reverse charge. एक और थिंग है that if rule cannot be applied then date of entry in books, and if associate enterprise supplier outside India then date of entry in books or date of payment whichever is earlier. नाउ कमिंग टू रेजिडरी प्रोविजन, इतना भी प्रोविजन लगाने के बाद भी अगर हम लोगों को टाइम सप्लाई नहीं मालूम चलता है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न और डेट ऑन विच टैक्स पेड, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न और डेट ऑन विच टैक्स पेड इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और अंत में है एडवांस पेमेंट अप टू 1000। अगर आपका इन्वॉइस कटा था 875 के लिए लेकिन आपने उसे 900 रुपये दिए, जो 25 रुपये एक्स्ट्रा थे, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? तो टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर। तो दिस कंप्लीट्स द एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। धन्यवाद।